Hello, everyone. Good morning, and successfully, like 1 month completed, 1 month and 1 days of this particular year. जबकि किसी चाचा ने को बोला था कि 26 में तो दुनिया खत्म है। ठीक है? So चाचा का मोस्ट प्रोबब्ली टाइमलाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम था. So let the Loki and Doctor Strange fixed it. So let's start with the biggest highlight. I'm not sure how much you are following social media these days, but things are getting weird. Yes, Epstein फाइल हो, ये हो, वो हो, बहुत सारी चीजें जो है वो ओवरऑल फैशन में मिला के कल का सोशल मीडिया वाज लाइक बहुत डिफरेंट. नाउ हेलो दक्ष, राइट? हाँ, फिर यस्टरडे वाज अ बजट डे एज वेल, तो काफी कुछ हो रहा. एंड आज के न्यूज़पेपर में भी मेजरली बजट ही है, एक्सेप्ट फॉर लाइक वन और टू न्यूज़ेस. बाकी पूरा जो है वो आपको बजट के उस पे मिलेगा. सो दिस इज नॉट अ टॉपिक बजट की, अगर हम बात करें जो एक दिन में पढ़ाया जा सकता है या एक दिन में कंप्लीट हो सकता है. एंड सो वी गॉट सम बेसिक्स ऑफ दैट. And within 1 or 2 days, I'll complete the study of budget, and then I can come up with a proper video जिस पे हम बजट को एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं. राइट. एंड फिर एक प्रॉपर वीडियो आएगा जिस पे अपन बजट के बारे में डिस्कशन करेंगे, बजट क्या था, क्या है, क्या नहीं है, जो मेजर हाइलाइट्स हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. एंड देन उसके बाद फिर एक प्रॉपर वीडियो. I don't think like even the experts. I was like watching like a lot of video yesterday in YouTube, and some of the best economists, they are having YouTube channel and they are presenting something. They all are saying it will take 2 to 3 days to proper decode the entire budget, and we can just say the highlights, what they want, how they are planning, and what other things are. So वो जो particular basics हैं वो मैंने note down किए, and I'll discuss those basics as well. We are not going to get into the too much thing. Okay, so let's get into the top newses. So सबसे पहला न्यूज़ ये था कि भाई साहब बजट 2026. यस. सो बजट 2026 जो है वो यस्टरडे श्रीमती निर्मला सीतारमन, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, शी प्रेजेंटेड इट, राइट. एंड शी इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो बजट आया है. सेकंड, देयर आर लॉट ऑफ थिंग जो एप्स्टीन फाइल्स में देखने को मिल रहा है. Yes, the opposition is saying the name of our prime minister, the name of our petroleum minister, that is Hardeep Singh Puri, and some other prominent name like Ambani. Yes, Anil Ambani, and some other businessman's name is there. And like government strictly refused it, that is like there is any connection with steam file of any government official, whether that is prime minister or other ministers. राइट. जोफरी एप्सिन के बारे में बहुत बातें चल चुकी है. आई एम नॉट श्योर हाउ मच यू रेड. Majority of them is conspiracies, but there is a reality that he was not a good person and he trafficked like human trafficking, uh, child prostitution. ये कुछ ऐसे particular term हैं जो उसके लिए यूज होते हैं. Some people says he died, some people says he was murdered in the jail, and some other thing. तो हम उस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे. Except, I don't think and I don't believe that anyone from our country. There are people who are bad. There are people who are not at all human. Right? They conduct such kind of crime. That's for sure. But I don't think any official, from our government or something, they are going to be the part of it. So let's not discuss this. Apart from this, so Sunita Pawar hai, she took oath as a deputy chief minister. तो महाराष्ट्र में अलग पॉलिटिक्स हो रही है, राइट. एंड देन क्रिकेट में हमने न्यूजीलैंड को 4-1 से हरा दिया है. एंड यस्टरडेज मैच लाइक भाई साहब तबाहियां. यस, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, दे वर लाइक भाई
हम तो बस यहाँ पे कुटाई करने आए हैं। एंड देन के मल्टीप्लिसिंग न्यूज लाइक कि हम तो यहाँ पे सिर्फ विकेट लेने आए हैं. So things were getting critical and match was good. Then we got another news about tennis. आज हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना, कि किस तरीके से यंगेस्ट ग्रैंड स्लैम चैंपियंस हमें मिले हुए हैं अभी. राफेल नडाल के बाद एक नया नाम आया. We'll discuss this. ठीक है. So that is what we have to do. So कुछ मेजर उसमें चले जाते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बजट. इसका डिस्कशन करेंगे बजट. ओके. If you'll see closely, like आज का जो particular cartoon है वो भी बहुत critical है. If you'll see closely, you can find oil, tariffs, war. Okay, these are the problem which actually should be addressed और वो address की गई. Then we got infrastructure, connectivity, technology, digital and creative what we can say boundaries, है ना? 10,000 plus MSMEs. Then we are having strategic and advanced manufacturing locations, localization, etc., etc. And these all the things were there. जो कि है. First of all, let's discuss budget क्या होता है ना? For example, let's say my father, like there is a family, okay, and family में there are going to be earning sources, there are going to be consumption sources. So जो अर्निंग सोर्सेस हैं वहां से पैसा आता है एंड जो एक्सपेंडिचर है, राइट, वहां पे पैसा जाता है. सो दोज एक्सपेंडिचर कैन बी इंपॉर्टेंट, लाइक फॉर एग्जांपल फूड, हाउसिंग, ट्रैवल अलाउंस, एजुकेशन एंड सम अदर पर्टिकुलर थिंग. सो दीज आर समथिंग जिसमें पैसा इन्वेस्ट होता है. वो पैसा आता कहाँ से है? दैट इंक्लूड्स लाइक सैलरीज, राइट, लेट्स से क्रेडिट कार्ड, लेट्स से कुछ जरूरत पड़ी एडवांस में तो बोरोइंग, एंड कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ तो उसका रिटर्न. एंड गवर्नमेंट के पास भी यही होता है. गवर्नमेंट के पास सैलरी इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस, क्रेडिट कार्ड, दैट इज द क्रेडिट फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स और समथिंग, बोरोइंग कैपेसिटी जो बाहर से उधार लेता है. देन देयर आर रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट दैट गवर्नमेंट डिड इन द डिफरेंट सेक्टर्स, है ना? यस, राइट. तो ये जो पर्टिकुलर चीजें हैं गवर्नमेंट के पास भी होती है. सो गवर्नमेंट कलेक्ट मनी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, एंड देन दे allocate money for the expenditure. For example, defense, for example, infra, for example, some other sectors. And for that, the different ministries, different department send their need that we need this amount. दिस फिर उस एलोकेशन जो है अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज होता है कि सोर्सेज हैं कितने, हमारे पास कितना पैसा है. सो अकॉर्डिंगली वी विल allocate. So that is the process of making budget of a household, and similar process is being used from the government of India as well. So that is what budget is. Now there are particular things जो इस बार के बजट में क्वेश्चनेबल है. For example, we live in 2026. The budget is of 2026-2027. But there is no immediate talk or immediate plan of action for next 3-4 years, which technically are going to be critical thanks to sada hua santara, that is Chacha Trump. सो कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो नेक्स्ट 3-4 ईयर का प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, हाउ वी आर गोइंग टू टैकल ट्रम्प, हाउ वी आर गोइंग टू टैकल द इंटरनेशनल लाइक प्रॉब्लम्स थ्रू व्हिच ऑयल एंड अदर एनर्जी सोर्सेस एंड सम अदर थिंग्स आर गेटिंग कॉम्प्रोमाइज. तो 3-4 साल के लिए नहीं है. मेजोरिटी ऑफ थिंग्स आर फोकस इन 2030, मेजोरिटी ऑफ थिंग्स आर फोकस इन 2047, and people and experts are not very happy with this. उनका ये कहना है the budget is about this. Then there are a lot of announcement in the budget, but there is no clear indication how those announcements are going to be completed. For example, 7 different जगहों पे इन्होंने बोला कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे. मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन is still pending, right? And people are asking, there is no clear cut description how we are going to get fund for those bullet train setup, how we are going to get like technology for those bullet train setup. These are merely like announcement, not having a proper plan. तो एक्सपर्ट्स जो हैं वो इन चीज में थोड़ा सा प्रॉब्लम वो कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास जो इमीडिएट 3-4 इयर्स के चैलेंजेस हैं उन पे उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस नहीं किए.
So technically, somewhere the experts are telling the government is failing to recognize, failing to accept that they have any plan for next 3 4 years to counter the external factors like Trump, America's tariff, international politics, oil crisis, energy crisis, which we are going to see in future because of these wars. उसको tackle करने के लिए they don't have immediate plans. So experts के अपने अपने opinion है, and sometimes it looks correct because planning 2047 and not like putting any particular effort on the immediate issues, ये थोड़ा सा questionable होता है. तो there are opinions for the budget जिसमें अच्छा और बुरा दोनों हैं, and there are particular opposition which is like, है ना, जो राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट है, जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन, उनका ये कहना है, यूथ विदाउट जॉब, farmers in distress, the looming global shocks, all ignored, a budget that refuse course correction, blind to India's real crisis, right? और वहीं पे हमारे जो पर्टिकुलर पीएम है उनका कहना है, our effort has been continuously strengthened, skill, scale, and sustainability reflects the thinking of the youth, their dream, resolve, and vigor. So the problem is it's not about how you are going to tackle. The problem is about addressing the problem, right? So बहुत सारे ओपिनियन है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वो हैं, क्या कहना चाहिए, चीजें हैं जिसपे अभी और पढ़ना, अभी और समझना बाकी है. आई टोल्ड यू इट्स इम्पॉसिबल टू एनालाइज द एंटायर बजट इन वन डे, फ्रैंकली. और ये सारे एक्सपर्ट्स खुद के लिए भी कहते हैं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं, आई एम जस्ट लर्निंग फ्रॉम अदर एक्सपर्ट्स, राइट? आई नो इकोनॉमिक्स, आई नो बेसिक्स, बट जो चीज एक्सपर्ट होते हैं, जो लाइक द पीपल हु आर पीएचडी, द पीपल हु आर रिसर्चिंग इन इकोनॉमिक्स, दे आर मोर व्हाट वी कैन से oriented for this, like more experts for this. They are the more to go for this. So I'll research and I'll study. And उसके बाद क्या निकल के आता है हम उस पे बात करेंगे. So let's discuss what is budget 2026. What are the basics of budget 2026? हम इसकी बात करेंगे, ठीक है? सो हम उसकी बात करते हैं क्या. सो व्हाट इज यूनियन बजट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं. यूनियन बजट होता क्या है. थोड़ा बेसिक्स पे हम जा रहे हैं, है ना. वी आर इनटू द हार्डवेयर मोड. नोटिस बोर्ड, सॉरी, बोर्ड एंड पेन पेपर. आई होप यू लाइक इट, राइट? सो कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 112, राइट. इट टॉक्स अबाउट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. किसकी बात करता है ये? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है. And the thing is, the Constitution never anything like mentioned about this. Uh, no, that is budget. Constitution में कभी भी budget नहीं होता है. So the government of India, Ministry of Financial, like Ministry of Finance, the finance minister always present budget in the Lok Sabha, in the parliament, and it's about it shows what it shows. मैं simply वो करता हूँ. It shows the estimate receipt, that is income, right, and expenditure, that is spending for the upcoming financial year. Through the budget, government outlines its financial priorities, policy intent, right, and it is presented every year. The objective of union budget is to promote economic growth, ensure social justice, and inclusive development to maintain the physical discipline. These are the terms जो properly हम use करते हैं. So, बजट का मेन मोटिव क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल जस्टिस का इंश्योर करना, inclusive development of all the aspect of the society. The last one is maintain the physical discipline. So these are some particular things जो है. अब इस साल की बजट की जो पर्टिकुलर बात है, तो इस साल के बजट में जो एम बताया गया है, right, that aim is transform aspiration into achievement and convert potential into performance. So aspiration into achievement, right, and potential into performance. इस बार मेनली इसी पर्टिकुलर चीज पे बात हुई. एंड कोर फोकस इज लाइक, जो कोर फोकस एरिया गवर्नमेंट ने एक्सप्लेन किए हैं, दैट इज स्टेबिलिटी,
that is physical discipline, right? Sustainable growth, and the last one is moderate inflation. These are the main particular area of focus जो उन्होंने निकाल के दिए हैं हमें, राइट? सो एक बजट का एम है जिसमें एस्पिरेशन को अचीवमेंट में, पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में वो करने का कहना चाहिए, ट्रांसफॉर्म करने का एम लिया गया है. द मेन एरियाज इंक्लूड स्टेबिलिटी, फिस्कल डिसिप्लिन, सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन, मॉडरेट इन्फ्लेशन. There are some particular highlights. And this time, she decided, our finance minister decided to divide the budget into kartavyas, the moral duties. Right. So, first thing, they said Yuva Shakti. Yes. This budget is driven under the influence of Yuva Shakti, and this is the sankalp that they took. Yes, the government sankalp. उसके अंडर उन्होंने लिखा है द बजट फोकसेस ऑन द पुअर, underprivileged, disadvantaged, with a strong emphasis on the empowering youth as drivers of the national development. Right? I'm repeating again. The budget focuses on the poor, underprivileged, and disadvantaged, with a strong emphasis on empowering youth as drivers of a national development. तो उन्होंने युवा शक्ति को एक वो दिया हुआ है. हाँ, हमारी गवर्नमेंट नाम देने और टर्म्स यूज करने में बहुत एक्सपर्ट है, एंड दिस इज वन ऑफ देम. देन उसके बाद उन्होंने कर्तव्यास में वो किया. सो फर्स्ट कर्तव्य था, उसमें उन्होंने जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको एक्सेलरेट करने की बात की, राइट? एंड सेकंड कर्तव्य में दे मेंशन्ड अबाउट द एस्पिरेशन, जो फुलफिलमेंट ऑफ एस्पिरेशन ऑफ पीपल है, फुलफिलमेंट टू टुवर्ड पीपल, उसकी बात की, right? And the third kartavya, which includes the vision of सबका साथ सबका विकास. आई नो थोड़ा सा बोरिंग है, बट थोड़ा सा चीजें समझने के लिए जरूरी है. So first कर्तव्य, that was accelerate and sustain the economic growth. For that, enhance productivity and competitiveness, ये पहला उनका मोटिव है. Second is build a resilience against the volatile global economic condition. They finally actually accepted कि हाँ, there is an economic condition globally which is volatile. So we are going to build a resilient against the global economic volatile conditions. But how? They didn't mention. Second कर्तव्य was fulfillment aspiration of the people, build people's capacity, make citizens strong partners in India's journey toward prosperity. यहाँ पे उन्होंने एक अच्छा काम किया हुआ है. जो जीएसटी 2.0 था, उसके थ्रू इन्होंने लोगों को काफी अच्छी स्पेंडिंग कैपेसिटी जो है वो प्रोवाइड कराई, एंड उसके कारण थोड़ा सा हमारा जो डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन गुड्स एंड फॉरेन पर्टिकुलर वो है, इंपोर्ट है, वो थोड़ा सा कम हुई है. तो जीएसटी 2.0 एक तरीके से एक अच्छा स्टेप निकल के आया. The third कर्तव्य was विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास. Ensure every family, community, region, and sector has access to resources, amenities, opportunities for meaningful participation in the development. That's what they are saying. ठीक है, ये इनका हो गया क्या, अपने तीन कर्तव्य जो उन्होंने एक्सप्लेन किए थे. देन मूविंग ऑन टू द की पिलर्स जिसकी इन्होंने चर्चा करी है, राइट? मैं बता देता हूँ लिखने से ज्यादा. सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, strengthening the foundations of the growth, people centric development, trust based governance, ease of doing business and ease of living, physical matters. These were the ones जिन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग पिलर्स पे फोकस करके पूरा बजट जो है वो क्रिएट किया. नाउ उसके बाद अब आ जाता है पूरी तरीके से टेक्निकल एस्पेक्ट, जो मेजर वो है फिजिकल कंडीशन है, उसकी बात करें. डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो जो है वो एस्टिमेटेड जो उन्होंने लगाई हुई है, दैट इज 55.6 एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर, दैट वाज 56.1. सो हमारा डेब्ट टू जीडीपी रेशियो भी कम हुआ है. फिर जो फिजिकल डेफिशिएट है
जो हमारा घाटा है ना, हाँ, वो ये है कि भाई 4.3% होना चाहिए इस पर्टिकुलर ईयर, विच वॉज 4.4% लास्ट ईयर। सो ये भी कम हुआ है, राइट। सो फिजिकल डेफिसिट एंड डेब्ट टू जीडीपी रेशियो ये भी कमजोर हुआ है, मतलब कम हुआ है, दैट दीज आर द गुड न्यूज़। तो नॉन डेप्ट रिसिप्ट है, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, इसको अपन बाद में बात करेंगे। दो मेजर जो फैक्टर्स होते हैं, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कि हमने कितना कितना उधार ले रखा है जीडीपी कंपैरिजन में, वो लास्ट ईयर से कम का हमने टारगेट रखा और कम होगा। फिजिकल डेफिसिट भी लास्ट ईयर से हमने कम रखा है और हम उसी पे काम करने वाले हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट फ्रॉम वेयर द रेवेन्यू विल कम, या इनकम कहाँ से आएगी। तो इनकम कहाँ से आएगी, तो उसमें सबसे पहले जो है वो है बोरोइंग। The highest will be from the borrowing and the other liabilities, जो उन्होंने 24% टारगेट कर रखा। देन जो टैक्सेस है, which is income taxes, right, that will be 21%. Then corporation tax will be contributing 18%, and then GST and others, that is indirect taxes, which will be include 15%. For non-tax recipient will be 10%, union excise duty will be 6%, customs will be 4%, non-debt capital recipient will be 2%. Overall, these are the income sources which they had estimated for the next year, right? Then we will move toward the expenditure, जो expenditure को उन्होंने explain किया है, that is सबसे ज्यादा जो highest expenditure जो है, that is given to state shares of taxes and duty. Yes, state shares of taxes and duties, that will go 20, that will go 22%. Then this is something थोड़ा सा alarming है, interest payment, that is 20%. Yes. सो हमने जो उधार ले रखा है उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट है, दैट इज गोइंग टू अकाउंट फॉर 20% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। दिस इज समथिंग जहां पे कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहाँ पे हम कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसीज में मात खाते हैं। यस, द वे वी आर गिविंग सब्सिडीज, द वे वी आर गिविंग फ्रीबीज, it's something which actually give a proper shock to the like source and expenditure। अगर हम फोकट में 30-30 40-40 हजार करोड़ रुपए हर महीने या हर साल सिर्फ इसलिए दे सकते हैं हर डिफरेंट स्टेट्स को, इट्स नॉट ओनली जस्ट वन स्टेट, राइट। इवन इफ अ स्टेट, individual state is taking like money from any other bank as a loan, ultimately it's going to be on the center as well ना। तो उनका ये कहना है कि जो इंटरेस्ट पेमेंट है, दैट इज समथिंग जो अलार्मिंग है। द गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन वेलफेयर रादर देन फ्रीबीज, राइट। फिर जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल की जो स्कीम्स है उसमें अप्रोक्सीमेट 17% खर्च होने वाला है। डिफेंस गेट द आउट ऑफ मिनिस्ट्रीज, डिफेंस गेट द हाईएस्ट चंक, दैट इज 11%, राइट। देन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है, they are going to have 8%. The Finance Commission and other transfer will be 7%. Other expenditure, they said 6%. Major subsidies, that is, sorry, other expenditure that will be 7%. So major subsidies that will go for 6%. And pension will account 2%. So these are the expenditure they have mentioned. राइट। सो दिस वाज समथिंग जो आउट ऑफ बेसिक निकल गया है कि हाँ इतना पैसा है और इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, उसको खर्च करने वाले हैं। देन they started mentioning the new projects, like for example manufacturing के लिए क्या है, MSMEs के लिए क्या है, राइट, एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग के लिए क्या है, जो ऑरेंज इकोनॉमी है, राइट, या लाइक एक्सीलेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, इन सारी चीजों के लिए क्या है, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन सोर्सेस, and then we are having textile sector, we are having boosting productivities, tourism, जो दिव्यांगजन है उनके लिए स्कीम में क्या है, हेल्थ केयर में क्या है, देन सम अदर पर्टिकुलर थिंग। तो उन्होंने सेक्टर वाइज इस पे बातें की हैं कि हमने किस किस चीजों पे वो किया। वी आर गोइंग टू डिस्कस इट बट नॉट टुडे। कुछ मेजर हाइलाइट्स जो हैं हम उसकी बात कर लेते हैं। तो लेट्स गो बैक टू आवर ओरिजिनल टीपीडी, है ना, जैसे पूरा बजट ही तो है आज के उसमें। Yeah, today we are only going to see budget. So,
कुछ जो मेजर हाइलाइट्स हैं हम उसकी बात करते हैं, जो बजट की हाइलाइट्स हैं। लाइक दिस इज समथिंग, do we have remember Daksh, you don't need to remember the percentage like this. It's just like कि मैं तुम्हें एक बेसिक समझा रहा था कि अगर पैसा कहीं से आता है तो कितने कितने परसेंट कहाँ से आता है, देन अगर उसको एक्सपेंडिचर में डालते हैं तो किस तरीके से कितने परसेंट जाता है. It's not something that you should remember, except for terms like physical deficit, GDP to debt ratio, what are the expected growth, economic growth they are planning, and something like this. जो मेजर डेटा है वो तुम्हें पता ही होना चाहिए. एंड एज एन अवेयर सिटीजन, this is something that you should always remember. Rest, like corporate tax से कितना आ रहा है, income tax से कितना आ रहा है. This is something you are just supposed to note down कि हाँ, these are the source of income of the government. Right? It's not compulsory कि ऐसा हो. And the data they are mentioning, for example, if they are saying income tax से 21% आएगा, तो this is something which is estimated. I mean, we are talking about for future, na, 25, 26, 27. So this is estimated. They are not going to be completely true. ये हमें पता चलता है इकोनॉमिक सर्वे में, which we had already discussed. इकोनॉमिक सर्वे लास्ट ईयर का पूरा बाइंड अप करके हमें देता है कि क्या हुआ. ठीक है. सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. बजट इज समथिंग जो कि एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर होता है. राइट. एंड इसलिए हमें उसको प्रॉपर फॉलो करना चाहिए कि भाई ये क्या कह रहा है. डेटा इज नॉट समथिंग जो होना चाहिए. So I made some key highlights of this particular financial statement, annual financial statement. Right, the budget majorly prioritize massive infra and manufacturing. Right, yes. The thing is कि these are the two particular places जहाँ पे इंडिया को सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत होनी भी चाहिए, especially manufacturing. The government, BJP government, starting from 2014 to now, it's it's that clear-cut statement that infrastructure में वो करेंगे, statement, right? Sorry, investment, and they are doing it in a very good manner. We can see the growth of infrastructure from last 10 years, whether that is road connectivity or any other particular clusters or something like this. Yes, there are certain particular sectors जहाँ पे अभी भी problem है. There are some announcements जो अभी भी missing है, जिनका execution missing है. So infra is something जहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ discussion पे बाकी है. But manufacturing is something जिस पे investment होना ही चाहिए. That is how we are going to make our economic better, our rupee, our currency better, and our dependency on others less. क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल वॉलेटाइल इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं, अगर हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग नहीं की, ग्लोबल कंजम्पशन स्ट्रांग नहीं किया, तो प्रॉब्लम होगा. तो दिस इज गुड दैट दे आर फोकसिंग ऑन दिस. The total expenditure they are expecting was like 53.5 lakh crore rupees, which is huge. And the capital expenditure, अगर मैं बात करूं जिसको हम कैपेक्स कहते हैं, right? Capital expenditure, which is known as capex, is close to 12.2 lakh crore, जो 9% क्या कहना चाहिए राइज में है लास्ट ईयर से, फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. सो कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर चीज अच्छी है कि लास्ट ईयर से ज्यादा हम इंफ्रा डेवलपमेंट पे क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं. देन जीडीपी टू डेब्ट रेशियो, फिजिकल डेफिसिट हम बात कर चुके हैं. राइट. नाउ टैक्सेस एंड फाइनेंसेस पे बात करें, अगर हम पर्सनल टैक्सेस एंड फाइनेंसेस पे हम बात करें, किस पे, पर्सनल केस में, तो द बजट मेंटेन द स्टेबिलिटी इन द इनकम टैक्स स्लैब्स. तो जो लास्ट ईयर स्लैब थे, जो टैक्स स्लैब्स थे, वही इस साल चलने वाले हैं. बट offers significant procedural relief and specific exemptions. So tax slabs में कोई change नहीं है, that is for sure. But कुछ specific reliefs जो हैं वो इस बार offer किए गए हैं, so that public can have more money in their pocket. There was something mentioned like how rupee value down is helping us to reduce the loss of tariffs. I didn't get this. Daksh, there are certain particular things जब there are particular cases जहाँ पे करेंसी की वैल्यू को डिवैल्यूएट वो की जाती है, राइट, बट दैट इज डिफरेंट. है ना, यहाँ पे इफ द रूपी डॉलर वैल्यू इज कंटिन्यूअसली लाइक डिक्रीजिंग एज कंपेयर टू डॉलर, इफ रूपी वैल्यू इज डिक्रीजिंग, देन हमारे इंपोर्ट पे काफी इफेक्ट होता है, हमारे फॉरेक्स पे होता है. इन सर्टेन केसेस नहीं होता. विल डिस्कस दिस, अभी थोड़ा बजट पे रहो, पूरा डिस्कस करेंगे.
ठीक है। सो कुछ स्पेसिफिक रिलीफ्स ऑफर किए गए हैं। देन कोई मेजर चेंज नहीं आया इनकम टैक्स में, मैंने बता दिया था। द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025, राइट, यस, आईटी एक्ट 2025, दिस इज अबाउट द टैक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नहीं है ना। अप्रैल 2026 से क्या आ जाएगा, कंप्लायंस में आ जाएगा। सो अप्रैल 2026 से वो एक्ट जो है वो प्रॉपरली कंप्लायंस में आ जाएगा। देन देर आर हेल्थ केयर रिलीफ, custom duties on like exempted on 17 life saving cancer drugs and rare disease medicine. So जो हेल्थ केयर है उसमें भी 17 जो पर्टिकुलर लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जो कैंसर मेडिसिन है, उस पे उन्होंने टैक्स एग्जम्पशन दिए हुए हैं। ट्रैवल वगैरह जो है वो थोड़ा सा आसान हो गया। यस, जो फॉरेन पैकेजेस हैं वहाँ पे जो है वो थोड़ा सा चीजें सस्ती हुई है। फॉर एग्जांपल, जो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्सेज ऑफ द फॉरेन टूल्स एंड एजुकेशन मेडिकल रेमिटेंस एट दी एलएसआर हैज बीन स्लैश फ्रॉम 5% टू 2%। जब हम फॉरेन टूल्स करते थे तो देयर वाज लाइक 20% जीएसटी जो पहले ही वो हो जाती थी, अब वो 2% कर दी है। एजुकेशन वाले केस में दैट इज 5%, राइट। मार्केट टैक्सेस, जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स एसटीटी, ये थोड़ा सा वो है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, ये भी बढ़ा दिया गया है। सो फ्यूचर जो है वो 0.02 से बढ़ा के 0.05 कर दिया गया है। एंड कुछ और पर्टिकुलर चीजें उस पे टैक्सेस बढ़ाए गए हैं। सो अल्टीमेटली द एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि गवर्नमेंट नीड्स सम मनी फॉर इन्वेस्टमेंट, और वो कहीं ना कहीं से ऐसे पर्टिकुलर एरियाज को छू रही है जहाँ पे उन्होंने बहुत ज्यादा वो नहीं किया था, टैक्सेस नहीं लगाए थे। देन जो की सेक्टर्स विच इंक्लूडेड, जिनको काफी फंड गया, उसमें रेलवेज है। 7 न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, 7 न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात की गई, राइट, रेलवेज में। एंड अप्रोक्सीमेट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2.8 लाख करोड़ का एलोकेशन दिया गया है रेलवेज को। यस बच्चे लोग, पहले रेलवे का बजट अलग आता था, फिनिशिंग बजट अलग आता था, नाउ दे आर कंबाइंड। ओके, ओके। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग जो है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जो है, उसमें एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट देखा है विच इज लाइक 40,000 करोड़, एंड दैट इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, right? 10,000 crore for SMEs. Yes. Okay. And भारत विस्तार करके an AI टूल फॉर फार्मर्स, उसके लिए भी उन्होंने काफी वो किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, लॉन्च करने की बात की है। एंड फिर उसके बाद अल्टीमेटली जो बजट का मेन पर्टिकुलर फोकस होता है, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, चीपर, कॉस्टलियर, राइट। So some items have become cheaper due to duty cuts, such as cancer and rare medicines, rare disease drugs. मोबाइल फोन, मित्रों मुबारक हो, तुम आईफोन और सस्ता ले सकते हो सून। मोबाइल फोन एंड टैबलेट्स जो है वो सस्ते हुए हैं, राइट। पर्सनल इंपोर्ट जो है वो सस्ता हुआ है। फॉरेन एजुकेशन एंड ट्रैवल, जैसा कि मैंने बताया, वो सस्ता हुआ। फॉरेन एजुकेशन एंड ट्रैवल वो सस्ता हुआ है। लिथियम आयन सेल्स, मतलब जो बैटरीज हैं, वो सस्ती हुई हैं। न्यूक्लियर इक्विपमेंट ये सस्ते हुए हैं, राइट। क्या महंगा हुआ है, अगर मैं उसकी बात करूं, तो ट्रेडिंग थोड़ी सी महंगी होगी। आई टोल्ड यू अबाउट द एसटीटी, राइट। शेयर बायबैक, जो कैपिटल गेन्स के कारण शेयर बायबैक है, वो महंगा हुआ है, राइट। सिगरेट एंड टबैको महंगी हुई है, दिस इज गुड, है ना। ये अच्छी चीज है, जल्दी हो जानी चाहिए। देन जो इम्पोर्टेंट टेलीकॉम गियर्स हैं, राइट, वो महंगे हुए हैं। एंड अगर आपने इनएक्यूरेट टैक्स रिपोर्टिंग की है, टैक्स गलत भरा है, तो 100% पेनल्टी हाई हुई है। तो दीज वर द मेजर आउटकम, मेजर पर्टिकुलर हाइक्स, चीप एंड कॉस्टली वाला सेटअप जो आपको बजट में देखने को मिला है। आई होप यू गॉट इट। हाय आना।
यस। सो हमने बाकी सारी चीजों की बात कर ली। कुछ जो पर्टिकुलर चीजें हैं वो ये हैं कि रेयर अर्थ मिनरल के लिए हमने कुछ कॉरिडोर्स स्टैब्लिश किए हैं, विच विल बी इन केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। दीज आर द रीजंस जहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स मिलने के चांसेस है, तो हमने वहाँ पे रिसर्च डेवलपमेंट है, बाकी चीजों के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे चाइना पे हमारी डिपेंडेंसी कम हो। And there was a plus point about tax collection, how in recent year it has increased. Yes, yes, yes. And again, it's a humble suggestion to you. Please not watch news channels to see the analysis of budget. मैंने कल देख लिया था गलती से एक आधे घंटे के लिए, एंड मुझे समझ में आ गया कि जो मेरा एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, एंड मैं आपको भी यही कहूंगा। राइट, कुछ पर्टिकुलर अजय गुप्ता जो कि क्लियर टैक्स के फाउंडर हैं, उनका कहना है कि फोकस इज ऑन द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इनका कहना है कि जो एसटीटी हाइक है, दैट विल इंक्रीज द ट्रेडिंग कॉस्ट फॉर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स हु रिलाई ऑन द स्मॉल प्राइस मूवमेंट। इन इंडिया के अप्रोक्सीमेट 98% ट्रेडर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स हैं, सो इन गवर्नमेंट के लिए काफी पैसा मिलने वाला है। देयर आर पर्टिकुलर ड्यूटी चेंजेस जो आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे लिस्ट है। फाइनेंशियल एंड मिक्स बैग ऑफ कैपिटल मार्केट। न्यू इनकम टैक्स एक्ट टू बी इफेक्ट ऑन द अप्रैल 1। दो इनकम टैक्स एक्ट में भी वो जो सर्विलेंस वाला पार्ट है उस पे लेके काफी लोगों को क्वेश्चन वो है, बट दे आर कमिंग इनटू द इफेक्ट, राइट। एंड आफ्टर द बजट, the market dips 2% as the Sitaram increases the STT and derivatives. No, no, Adit, I'm not like lying. I just wanted to see how they are presenting. मैंने बोला ना, I'm not the expert, right? I know basic economics and I can understand कि किन चीजों पे गवर्नमेंट सॉरी इकोनॉमी अफेक्ट होती है, एंड आई जस्ट वांट टू सी व्हाट आर दोस पर्टिकुलर स्टेप्स जिससे वो सेक्टर अफेक्ट होगा। भाई साहब, these people are doing exceptional creative work on that particular thing. Some of them had made our finance minister श्रीमती निर्मला सीतारमन as लक्ष्मी मैया। भैया उनके यहाँ हाथ से सोना गिर रहा है। मैंने भाई ये क्या चल रहा है, कहाँ फंस गया हूं मैं। So it wasn't like even I didn't completed one complete hour, but the thing started feeling like भाई मैं गलत जगह हूँ, राइट। यस। तो मत पढ़ना प्लीज। 10,000 crore doses for the biopharma. Biopharma Shakti, right? This is the initiative that government of India has taken, and they wanted to make our biopharma sector to be the strongest. So they have like allocated 10,000 crore for those, right? A cheaper cancer drug, right? Training for 1.5 lakh caregivers. Now, this is something जो कि जरूरी है. Yes. Budget ignores the unemployment, social security, and said the trade unions. And yes, this year's budget, it wasn't talking about how they are providing, going to provide employment and social security. They talk about the investment in the social security, but they are not talking about how they are going to provide social security. तो ये थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, क्वेश्चनेबल था। And this is not only like trade unions. There are certain experts which are telling that there are some particular drawback about unemployment, and उसको गवर्नमेंट एड्रेस नहीं कर पा रही है। सो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इज फेलिंग टू एड्रेस दिस पर्टिकुलर इशू, and let's hope for the best in future. If the sectors are going properly, तो they can we can get such particular opportunities जहाँ पे employment बढ़े, right? Then the new rural job scheme will get 95,000 crore rupees of in like allocation. Expert says the allocation is insufficient to provide 125 work days to all workers, and government will need like an outlay of 2.3 lakh crores. 30,000 crore also has been set aside for मनरेगा। तो जो नया वीपी जी राम जी है उसके लिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि अप्रोक्सीमेट 2.3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए था, बट दे आर ओनली प्रोवाइडिंग 95,000। सो कहीं ना कहीं 95,000 करोड़ इज गोइंग टू बी लेस। ओके, सो है बहुत सारे एक्सपर्ट अपना अपना वो कर रहे हैं। देन पोस्ट सिंदूर मेजर बूस्ट फॉर द डिफेंस। यस, 7.85 लाख करोड़ जो है बजट किया गया, किसको एलोकेट किया गया डिफेंस को, and they will upgrade military capabilities to the global standard. Strategy emphasize on the self-reliance.
CapEx allocation, that is BRO infrastructure, 20 up to 20%, that is 2.19 lakh crore. 75% will be spent on the domestic procurement. तो जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, दे आर हैप्पी that they are being given good budget, and it is definitely what we needed. We have two friendly neighborhood. One of them eats bad, another one they don't have anything to eat. Sorry, sorry, मजाक नहीं. मतलब they are facing problems of poverty and something, but they are making bombs. तो है क्या कर सकते हैं? So both of the friendly neighborhood are nuclear power, and that is why we need good amount of budget, है ना? That is why defense को अच्छा खासा पैसा देना. This is a welcoming step. Okay, जल्दी हमें पता चलेगा कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इतने पैसों का करती क्या है. मूविंग ऑन, कहाँ गया एक और पॉइंट मैंने ढूंढा था. हाँ, दिस इज समथिंग जो कि अच्छी चीज मैंने आप थोड़ा सा बताया भी था. द रेयर अर्थ मिनरल्स, these minerals are used in missiles, electronics, some other communication technology. They are like majorly controlled by the China, and America Greenland को इसीलिए चाह रहा था. So if we get some rare earth minerals in our particular country, for example, we have rare earth mineral rich states like Odisha, Kerala, Andhra, Tamil Nadu, and we are establishing corridor for that. राइट. सो अगर हमारी माइनिंग कैपेसिटी बढ़ती है, अगर हमारा रेयर अर्थ मिनरल में स्ट्रेंथ बढ़ता है, तो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी, हमारे डॉलर्स बचेंगे, एंड हम अगर एक्सपोर्ट कर पाते हैं, तो एक्सपोर्ट में हमारे पास और ज्यादा फायदे होंगे, तो इससे हमारी इकोनॉमी को बूस्ट होगा. तो इट्स अ वेलकमिंग स्टेप, राइट. यस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. We have this particular discussion कि सेवन रेल हाई स्पीड फ्राइट कॉरिडोर रेल नेटवर्क, उसको वो मिला हुआ है ग्रीन फ्लैग. देन ये एडिटोरियल जरूर पढ़ना, है ना, कि बजट क्या कह रहा है. दिस इज टू अंडरस्टैंड कि क्या कैसा है. पुशिंग वेलफेयर टुवर्ड द स्टेट, ये जो अपन बात कर रहे थे, वी हैव डिस्कस दिस, दैट इंस्टीट्यूट ऑफ वेलफेयर फ्रीबीज पे थोड़ा सा ज्यादा स्पेंडिंग हो रही है. तो फॉर नाउ द वेलफेयर इज टुवर्ड लाइक पुश टुवर्ड द स्टेट्स, स्टेट का थोड़ा सा एक्सपेंडिचर बढ़े उस पे, राइट. एंड देन देयर इज नथिंग. थोड़ा बहुत चेन्नई गेट्स टू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर इन द बजट. इलेक्शन है क्या? सॉरी, नो पॉलिटिक्स. राइट. सेंटर एमिंग a 4.3 fiscal deficit for 26-27. And comments again, budget fails to test the economic strategy, doesn't address the challenges in identified in surveys. इस पे मैं भी एग्री करूंगा कि बजट में उसके बारे में कुछ नहीं है. Now let's get into the international news. अभी नेशनल में ही है. The Trump says India to resume the purchase of Venezuelan oil. तो ट्रम्प का कहना है कि इंडिया अब वेनेजुएला ऑयल जो है उसको परचेज करना कंटिन्यू कर सकती है, राइट. यस. मणिपुर के लिए अगेन एक डिस्कशन के लिए एमएलए अलायंस पार्टनर्स ऑफ बीजेपी मणिपुर कॉल्ड टू दिल्ली टू डिस्कस मी द इश्यूज. Then file exposed alleged link between Epstein, Anil Ambani, Delhi leadership, राइट. तो ये अभी डिस्कशन का पार्ट है. स्ट्रिक्टली जो पर्टिकुलर वो है, क्या कहना चाहिए, सच्चाई है, that is still to be discussed, still to be out. But yes, there are some particular what we can say things जो सामने आई है, एंड उसमें कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें निकल के आएंगी, समवन फ्रॉम द मोदीज का एंड समथिंग लाइक दिस. तो अभी उसमें जब तक हमें प्रॉपर वो नहीं मिलता, तब तक हम डिस्कशन नहीं कर सकते इस पे, राइट. एंड लेट्स मूव टू इंटरनेशनल न्यूज. Iran declares European armies as terror group in retaliation move. जो आईजीआरसी है, जो ईरानियन वो है रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प है, उसको इन्होंने बोला, इन्हें अमेरिकन यूरोपियन फोर्सेस को बोले. Trump says US started to talk to Cuba as he moves to cut the oil supply. म्यांमार इसराइल में वही चल रहा है. यहाँ पे एक अच्छी न्यूज, मतलब न्यूज तो क्या अच्छी तो नहीं है. इफ यूएस स्ट्राइक्स ईरान इट विल बी अ रीजनल वॉर, सेज खमाइनी. सो ईरान की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया कि अगर गलती से यूएस ने ईरान में स्ट्राइक किया,
there will be a regional war. That means कि जितने भी US allies हैं in the region of Middle East and Western Asia, वहाँ सब पे they are going to attack. Then let's move to the sports. Okay, the Spaniard suppresses the competent Nadal to become the youngest to achieve the rare feat of the Open era and denies the 38-year-old Djokovic the chance to get the 25th major crown. Yes, Alcazar, Carlos Alcazar, a Spanish tennis player. He had achieved all the four, like win all the four Grand Slams, right? And he is the youngest, that is 22-year-old, youngest to do this. Simply, अगर मैं बात करूं तो Alcazar, 25 year, 258 days, youngest man to complete the career Grand Slam, the sixth man to achieve the feat after Lever, Agassi, Federer, Nadal, and Djokovic. He won all the four Grand Slam और इसने भी Djokovic को हराया है ना? क्या? Australian Open, right? So he became the most, what we can say, youngest one, and I guess some 15-16 years का gap था जोकोविक और अल्कजार के बीच में जब ये मैच फाइनल मैच हुआ था. So this is a record that you should actually remember, है ना? He's a Spanish player, that is Carlos Alcazar. He is the one जो जिन्होंने youngest to win all the four Grand Slams. ठीक है? So this is it from my side for today. अभी तो uh, आज की न्यूज में कुछ खास था नहीं, इतना ही था. आज क्वेश्चन आंसर भी नहीं रखे हुए क्योंकि मेजर क्वेश्चन आंसर इसी चीज पे आते हैं. विकसित भारत में कितना दिया, इसमें कितना दिया, उसमें कितना दिया. तो मेनली दोस्त में जो क्वेश्चन भी होते हैं वो डेटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो हमने क्वेश्चन नहीं रखे हैं, बट कल से हम अपना क्वेश्चन आंसर वाला सेशन भी कंटिन्यू रखेंगे. नाउ लेट्स कम बैक टू लाइक सम डाउट. दक्ष, रुपये का कमजोर होना एट सर्टेन प्लेसेस इज गुड, बट मेजर प्लेसेस में वो गलत है. कल एक बैठ के प्रॉपर समझेंगे कि कहाँ से क्या कहानी है, मतलब किस जगह पे वैल्यू, करेंसी वैल्यू कम होना सही होता है, किस जगह पे ज्यादा होता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, टैक्स कलेक्शन हैव इंक्रीज, दैट्स फॉर श्योर. थोड़ा सा सर्वेलेंस बढ़ा, थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ी है, राइट? तो ये चीज है. बट टैक्स कलेक्शन बढ़ना अपने आप में एक अच्छी चीज है जिससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है. न्यूज़पेपर वाज, हाँ डेफिनेटली, टैक्स पूरे टाइम पे टैक्सेस, बजट, किसको कितना पैसा देना है, किसको कैसे लेना है, सो दैट इज गोइंग टू बी बोरिंग, बट मेक श्योर डू नॉट मिस इट. इन नेक्स्ट 2-3 days लाइक आई केम अप विद अ प्रॉपर वीडियो जिसमें हम बजट को प्रॉपर वो करेंगे. एट दैट टाइम यू कैन गेट अ प्रॉपर नोट्स सो दैट तुम्हारा भी बजट का वो रेडी हो जाए. इट्स नॉट समथिंग कि हम उसे मिस कर रहे हैं, बट बजट इज समथिंग जिसपे क्वेश्चन और क्लैट में पैसेज बन सकता है. तो लेट्स सी क्या क्या होता है. ठीक है? सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड. लाइफ में मस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो. सी यू टुमारो गाइस. गुड नाइट.